हाय व्यूअर्स, वेलकम टू राज का गराज। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आज, दिस इज़ मोर अबाउट जावाज राइडिंग गियर। पिछले टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था दैट वाज ऑन दी जावा स्टैंडर्ड एक्सेसरीज, एंड इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ मेजरली व्हाट दिस जैकेट इज़ ऑल अबाउट। सो राइडिंग गियर में तीन चीज़ें हैं करंटली फ्रॉम जावा। देयर इज़ अ हैंड ग्लोव विच वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 1200 rupees, 1299 something. There are two helmets available. Both are half-face helmets, Corona and Halo, which would cost you some 2,499 rupees. And this is a jacket, which is actually a Rhinox jacket in Java branding. And आपको Rhinox brand के बारे में तो बहुत से लोगों ने सुना होगा. It's one of the best brands available. And इस जैकेट की खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी इस वीडियो में, और उसकी प्राइस क्या है, और अगर प्राइस है तो वो क्यों इतनी है। सो इफ़ यू लुक एट इट, जैसे मैंने बताया, दिस इज़ एक्चुअली अ राइनॉक्स जैकेट। इफ यू लुक एट द चेन पुलर ओवर हियर, इट्स अ राइनॉक्स चेन पुलर। यहाँ पे भी आपको राइनॉक्स की ब्रांडिंग मिलेगी। दिस इज़ अ एल साइज जैकेट दैट आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी, और यहाँ पे आपको 6 जावा की लोगों के साथ ब्रांडिंग मिलेगी। देयर इज़ a Java impression on the print on the back as well, so it looks good. और इस पे अच्छे रिफ्लेक्टर्स भी लगे हुए हैं which come standard on all Rhinox jackets or all safety jackets we can say, riding jackets. और what's so great about it, ये आपको मैं अभी बताता हूँ. So this jacket is actually costing you 7,499. So that's the cost of this jacket, and I will say it is appropriate cost given that it's a waterproof jacket. It has good ventilation. It has removable lining, and it will even keep you warm during cold winters. इसमें adjustable straps भी आएंगे throughout the arm area, and you can even adjust the straps or the fitness of the jacket at your waistline. और इस जैकेट में खास करके इट्स द आर्मर पार्ट इज एक्चुअली इट्स अ 3-piece आर्मर जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा. सो दिस आर्मर इज अ CE अप्रूव्ड और अ CE लेवल 1 आर्मर. I'll tell you what is CE level 1. So in a CE level 1 आर्मर जो प्रोटेक्शन आपको मिलती है ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट, जब भी आप राइडिंग, गॉड फॉरबिड ऐसा हो नहीं, बट आप कभी कोई एक्सीडेंट मीट करते हो, तो ये जो फोर्स होता है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, इट शुड नॉट बी मोर देन 18 kilonewtons, which is a high force, but at during high speed falls, those kind of energy is actually transferred, impact energy is transferred to your body. So ये 18 kilonewton से ज़्यादा पास नहीं करता है इसके अंदर जो आर्मर लगा हुआ है. So यहाँ पे आपको ये एल्बो प्रोटेक्शन मिलता है, आपको ये शोल्डर प्रोटेक्शन मिलता है, एंड यू गेट अ बैक एंड स्पाइन प्रोटेक्शन. सो यहाँ पे भी आर्मर लगा हुआ है. सो इफ यू कैन लिसन टू दैट साउंड, यहाँ पे भी आर्मर है. सो अब अगर इसको देखोगे, सो दिस इज व्हाट प्रोटेक्ट्स योर शोल्डर कफ्स, दिस प्रोटेक्ट्स योर एल्बोज ड्यूरिंग अ फॉल, and the back and spine protection. It if you God forbid fall on your back, it does not transmit the energy, the force on your back and spine. So ये एक खासियत है. So that is the reason this jacket would cost you 7,499. So it's not a regular one जो आप कोई भी wind cheater type jacket. It's a armor guard jacket. So that is the cost. And जैसे मैंने बताया, Rhinox is a very good brand. इसके साथ आपको ये जावा की मोनोग्राम के साथ मिल रहा है. सो इट्स एक्चुअली राइनॉक्स जैकेट इनटू जावा ब्रांडिंग. सो आई वुड से दैट इफ यू आर बाइंग अ जावा, इफ यू आर स्पेंडिंग ऑन वन ऑफ दीज ब्यूटिफुल मशीन्स स्टैंडिंग हियर, आई कैन सी माई लवली क्लासिक. इट्स नॉट एक्चुअली माइन, बट दैट्स व्हाट आई हैव बुक्ड. सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आई वुड सजेस्ट प्लीज गो अहेड फॉर दिस वन ऑफ दीज ब्यूटिफुल जैकेट्स एज वेल. जैसे मैंने बताया, इसमें इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन मार्केट, अवेलेबल इन द मार्केट. And when you buy it, just make sure that you're buying the right size. Don't buy too loose, don't buy too tight. And because आपके comfort level को ये suit होना चाहिए, whatever size you buy. Because while you're riding, your comfort level should be at the most, at the best.
सो आई होप आपको इसमें से कुछ नॉलेज मिला है इस वीडियो में से अबाउट राइडिंग जैकेट और आर्मर जैकेट, व्हाट इज सी लेवल 1 प्रोटेक्शन जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है. सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसमें से आपको कुछ नॉलेज मिला है, तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए. आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ पोस्ट दोस क्वेश्चंस इनटू कमेंट्स. आई एंश्योर दैट आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट दैट आर बीन posted by viewers, and please subscribe to my channel. Thank you very much for watching.